I got a chance to work with Nagarjun sir and obviously Mr. B sir. He's a God's child. He's God's one of the most favorite children. They're fire on screen and they are beautiful human beings on set. So I feel very lucky, on koimoi.com जब मैं पतली कमरिया की बात करता हूँ तो कैप्शन ही अपने आप में एक मैसेज देता है, पैगाम देता है। उसके लिए फिजिकली बहुत काम करना पड़ता है कि आपको वर्कआउट वगैरह करना पड़ता है कि उस बात को, उस लफ्ज को मैच करना है। उसके लिए कितनी मेहनत करी आपने? Actually, honestly, bolu, I'm really, I have always been very blessed in that. When it's about the fitness and I believe that I am a disciplined person. So, जो मेरा everyday yoga होता है या meditation होता है या my food habits, they are how they are forever. Like now I can't even remember from the time that I have been doing all my sadhana, and also I have lots of injuries, so I have to kind of work with it. Which is why it's a very conscious thing because I know कि मैं gym गई या functional training किया तो मुझे फिर से कोई ना कोई injury हो सकती है. So everything is very charted out and अब वो मेरे schedule में बैठ गया है कि morning में उठो और 2 घंटा अपने आप को दो. So when a song like this comes up and when I know that probably I have to wear certain clothes that will show my midriff, all I have to do honestly is stop carbs for 10 days or 7 days. Like I am not how I was in the song now, and that's absolutely all right. You can't be how you're supposed to look in a song or in a particular project in your everyday life. It's not possible, So jitna ho sake, you can never be perfect. So whatever, how much ever perfection you can achieve for a certain project, I try to do that. ब्रह्मास्त्र भी रिलीज की कगार पे है और इतना सब कुछ हो चुका है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अयान मुखर्जी? Oh my God, he is a brilliant mind. He's all heart, and I think he's given this project his life. If I remember right, remember him telling me he's been working on this for 7-8 odd years. This project, from the time he thought of it and then he wrote. So yeah, I think I'll speak more about it when the film is on release. But he's a God's child. He's God's one of the most favorite children for sure. रणबीर and Alia, They're fire on screen and they are beautiful human beings on set. So I feel very lucky, on that particular project. I got a chance to work with Nagarjun sir and obviously Mr. B sir, the greatest. Oh my God, I can't forget that day. Shahrukh sir. So it's just ड्रीम कम ट्रू। yeah. कॉन्फिडेंशियल लंदन। जी, London Confidential, yeah. उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? It was something that came to me during a pandemic, and I don't know if it was my answered prayer or not. It was very, very long, and things were getting pushed. A lot of things have gotten canned as well. 2-3 projects that I was doing last year, and because of the COVID situation, I got that project, and I thought it was a meaty role. So I was there in London summers, shooting in the London outdoors, in the main city. Can't be anything better at that point of time. ये गीता का आपने जिक्र किया, शुरू से रहा है ये शुरू से? मैंने बचपन में पढ़ा था पर मुझे समझ में नहीं आया था इतना ज़्यादा. बट दिस गीता भगवत, वो गीता का सार पढ़ा था आई थिंक मैंने. ये पतली किताब होती थी, मुझे याद है. पूजा करके सुबह मॉम बोलती थी पढ़ो, तो हम पढ़ते थे लिटरली, लाइक संस्कृत लाइन और ट्रांसलेशन. Last 2 years back, my best friend, my childhood friend in fact, she lives in Abu Dhabi, she started studying it. And Mataji or Prabhu, Shweta Mataji or Rahul Prabhu, they are amazing. They are both professors and they're doing it just for seva. So I also joined the group right before the lockdown, but अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है. बट जिस वक्त मैंने शुरू किया था, मैं क्लासेस कर नहीं पाती थी क्योंकि उस वक्त शूट चल रही थी नॉन स्टॉप. तो कभी कभी वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे देती थी. बट ड्यूरिंग द एंटायर लॉकडाउन आई वाज वेरी रिलीजियस, एंड एवरीबडी, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल करिकुलम. आई जेन्युइनली फील इट मोर देन अ रिलीजियस बुक. इट इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक, इट्स लाइफ का सार. एवरीबडी, इट्स इटर्नल नॉलेज एंड इट्स बेसिक नॉलेज. आप कोई भी क्वेश्चन खोल के गीता, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, उसका पूरा का पूरा सारा आंसर है. आप ये कहना चाह रही हैं कि भगवत गीता को भी स्कूल करिकुलम में होना ही चाहिए. और बचपन से अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ग्रास रूट लेवल पे इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे थोड़ा बहुत मेडिटेशन, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज एवरी डे की,
आपके माइंड को उतना ही स्वस्थ रखने के लिए. मेंटल हेल्थ पे जो हम इतनी सारी डिबेट करते हैं, आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम very very early age, so that you kind of know the difference between, even if you're getting some negative thoughts, what to do about it, which doesn't lead to something that has gone very very bad, or that needs real help. So there's a need of Bhagavad Gita, you said rightly, very rightly you said just right now. जिस माहौल में बॉलीवुड स्टार रहते हैं, प्रेशर, कंपटीशन, कोई आगे, कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, 100 क्लब, 100 करोड़ क्लब, ब्ला ब्ला, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में बड़ी ज़रूरत है कि जितना हो सके, क्योंकि वो जिंदगी जीने का तरीका बताती है? मोस्ट डेफिनेटली, पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि पूरे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इफ़ यू थिंक अबाउट इंडियन फैमिलीज, जितने सारे हमारे बैरियर्स हैं, जितने सारे हमारी रूढ़ी थॉट प्रोसेस है, लाइक वी टॉक अबाउट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट बेटा पढ़ाओ, एंड इफ he make him understand a certain thing. So I think the society is in the need of this knowledge, or this I don't know, the basic things that people need to be aware of. We are not aware. We literally living in ignorance, and we actually come from a country of all the Vedas and Upanishads, and we don't do anything. We're sitting on a pile of gold mine and we don't do anything about it. So to answer your question, yes, most definitely, entertainment industry is a place where it's a very very stressful place. You don't have a concept of real Saturday Sunday. You don't have a concept of 9 to 5 job thing. We are constantly consumed in our own minds and thoughts, for sure. But having said that, even the rural India, even the different, like, all, whether it's in the villages or or the towns or the cities, we all are in dire need of what Bhagavad Gita teaches. Koimoi.com